Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tanmay, and I'm here to share my journey on my trades and a bit of the stuff if I come to that point. Now, let's check out the market. I'm going to share my analysis on a regular basis, daily basis. So, stay tuned and do like, share, and subscribe if you love my content. Okay, let's go and check Nifty Bank. So, we got the monthly chart right here. ना निफ्टी बैंक अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज पे है क्योंकि कुछ महीनों से मतलब वो लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रहा है अब this month we can see it is very close to the previous month lows. Now 41,520 is really close, like not so far, so we can clearly expect that if we get a closing in this month or in few more days, I'm expecting few more days, closing below 41,500, this market can go aggressively on the downside, and we don't see much supports as well, because the next this support will be easily breached, and we might hover around here and take further clues from the global news and something. So for the monthly analysis, this is done. Now let's jump to the weekly analysis. So अभी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है हम लोगों को. मेरा एनालिसिस कुछ यहीं पे था. Basically 41,500 going to act as a strong support in the near term, just as I said in the monthly. एंड यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है. इससे बड़ी बात ये है कि हम लोग ये वाला जो जोन है, दिस इज द अल्टीमेट सपोर्ट जोन. यहाँ पे ज़्यादा दिन लास्ट नहीं किए हैं, काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर गए थे, लेकिन ये डाउन साइड का जो ये कैंडल है, ये 19 दिसंबर यहाँ से जब ये वीक स्टार्ट हुआ है, this is a pretty strong candle, and you can see it, actually the volumes in the spot chart shouldn't be considered, but still the volumes are not that much considering the previous green candle. So weekly का तो हो गया. Now let's shift to daily. Daily is where the scene gets more interesting. This I prefer as a very range bound position. Now 41,500 यहाँ पे भी काफ़ी क्लोजर सपोर्ट दिख रहा है. ऊपर में रेजिस्टेंसेस तो 42,600 सबसे क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है रिसेंट टर्म्स में ऑन द डेली चार्ट. इससे ज़्यादा डेली चार्ट में कुछ नहीं है. वी कैन सी 3 ब्लैक रो पैटर्न. इसको जो आप देख रहे हैं, इसको 3 ब्लैक रो पैटर्न बोलते हैं. 3 ब्लैक रो कुछ ऐसे आता है. इसका सीधा साधा इंटरप्रिटेशन यही आता है कि बुल्स अपना नेक्स्ट जो सेशन होता है उसको थोड़ा सा ओपनिंग में मॉडेस्टली स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा हायर के दिख पुश करते हैं, लेकिन बाय द सेशन क्लोज, सेशन एंड, बेयर्स लोग हावी पर जाते हैं एंड द सेशन एंड्स लाइक दिस. सो व्हेनेवर यू सी लाइक द टॉप्स आर मेड क्वाइट नाइस, यू नो, हर एक कैंडल पे टॉप्स बने हैं, लेकिन उसके साथ कंटिन्यूअस सेलिंग, काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग है. और एक बड़ी बात है कि द विक्स आर प्रीटी डीप. यहाँ पे 42,350 का विक लगा के उसने क्लोजिंग दिया है 42,595, लाइक जस्ट लाइक यस्टरडे ऑन फ्राइडे. 41,883 का यहाँ पे लो, 41,877 का लो था, वो लो लगा के वही इसने 42,188 का क्लोजिंग दिया है. अब बैंक निफ्टी यहाँ पे 188 दिखा रहा है, डेली पे 188 दिखा रहा है. So let's move on to 15 minutes. Now 15-minute chart suggests
pretty much reversals. Not reversals actually. There are two explanations that can be made. One, हम लोग नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड एक्ट कर सकता है, रेंज बाउंड एक्ट कर सकता है। सो मैं 42,600 के ज़्यादा ऊपर ये वाला जोन, सॉरी, मैं 42,600 ये वाला जोन, इसके ऊपर ये क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद तो ये तो लाइंस और भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। मैं उतना एकदम टिपिकल एनालिसिस पे नहीं जाऊंगा बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, सो यू कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू यू। मैं मेरा एक साल ही हुआ है, मतलब एक्चुअली ट्रेडिंग करते हुए। आई एम अ कोविड ट्रेडर। मैं 2019 से ये स्टडी करते आ रहा हूँ। सो राइट नाउ आई एम 23 years old and if you and I can I can feel you like if you question my analysis, लेकिन it's a part of a journey and this is what we have learned. So 2019, 2020 was a quite a volatile year. VIX 40 50 30 इसमें जा रहा था। अभी तो VIX ज़्यादा कुछ नहीं है खास, 15 का VIX है लेकिन ऐड करता है 20 के, ऐसा कि ऐसा आपको मूव मिल रहा है। यहाँ पे इतना स्ट्रेट आता है, 865 पॉइंट्स डाउन एंड देन यू गेट शार्प वॉलेटिलिटी। सो आई नो सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट। If we see a flat opening, then we can expect uh, to have कि यहीं पे वो भटकता रहेगा in the closest resistance and closest supports. But I believe high chances are there that if it crosses like 41,881 or something like the previous day low, then the market can hang around a while, लेकिन half time के बाद the market can रीच 41,500। नाउ अब ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा वो हम लोग मंडे को देखेंगे या ट्यूसडे को देखेंगे, इसी हफ्ते में पता चल जाएगा। सो इफ इट ब्रेक्स, इफ 41,500 ब्रेक्स, देन द नेक्स्ट सपोर्ट would be 41,300 and we have a future gap here क्योंकि लॉन्ग शॉट है 43,331, क्योंकि अभी 2000 पॉइंट्स का फॉल देना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। सो उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर हैंगिंग लाइक क्लोजेस्ट गैप्स, बिकॉज ये वाला जो गैप था 41,881 इस लेवल से, ये वाला गैप पहले ही फिल हो गया था ऑन 23 दिसंबर। सो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम किया, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे ये रिटेस्ट होने वाला है 41,500, फिर से रिटेस्ट होगा, हो सकता है अगर अगर हुआ तो हाई चांसेस है कि ये 3 बार टच होता है, तो हाई चांसेस है कि ये ब्रेक डाउन देते हैं और हमको अच्छा प्रॉफिट मिले, आप कॉल शॉर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन इससे बढ़िया अगर ऐसा नहीं हुआ, आई मीन if this doesn't happen, then 15, what does the chart tells us? The chart tells us that it's a straight fall, तब यहाँ से स्ट्रेट नीचे आया है, अब ये थोड़ा ऊपर पे जाके रुका है, मतलब इतना अग्रेसिव फॉल को इसने अच्छी तरह से बीट किया है। नेक्स्ट लोअर लोज नहीं बनाया है, लोअर हाइज तो ये रेडी है। अब अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके ये जाए और फिर से लोअर हाई बनाए और ऐसे शूट अप करे, तो देन we can make, let me just clear it, wait for a second. Yeah, thank you. I know my drawing skills aren't good.
So back to the point. If we get a gap of opening में हाई चांसेस ये रहेगा कि देखिए यहाँ पे सेलर्स ट्रैप्ड है, ठीक है। यहाँ पे शार्प फॉल आया है, सेलर्स ट्रैप है। नाउ मार्केट को पैसा कहाँ पे मिलेगा? दैट सी मार्केट वहीं पे जाता है जहाँ एक्चुअली जहाँ पे मार्केट में लोगों ने पोजीशंस बना के रखते हैं, मार्केट उसके अगेंस्ट पे जाता है। सो by hitting the stop losses or making them book bigger losses. That's how market earns. Market has operators and many other stuff. Like actually market as a whole entity we can't talk. हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है. On the bigger sense, all the institutions, all the OI data you see right here, this is actually a mix of retail and institutions. So basically everyone. But the game is played ultimately against the major money. The smart money always wins, and those are very little. So यहाँ पे मेजर पैसा फंसा हुआ है on the downside. So high chances that maybe lot of them continued their shorts and 7 तारीख को 7 जन को आपको नोटिफिकेशन आया था कि क्वार्टरली सेटलमेंट होगा. सो ऑल दोज पीपल हु हैव कैश लाइंग इन देयर डीमैट accounts, they will be transferred back and for traders basically this is a big problem. बहुत जन मैं ट्विटर पे देखा कि निफ्टी बीस भी खरीद के गए हैं. Now, in my channel, I talk very honestly and very openly, so no problem about like you can discuss everything in the comment section if you wanna ask. Now, if we have a gap of opening, then previous low, previous high might be tested. यहाँ पे gap fill कर सकता है, high chances, and then slowly find its direction, जो कि upside पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को फिर से शॉर्ट नहीं करना है. यहाँ पे ऑलरेडी लोग देख चुके हैं कि एक बार पे डाउन साइड मोमेंटम आया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये जंप बैक कर गया. सो दे हैव मेड 41500 क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स. ओके, 41500 काफी अच्छा सपोर्ट बन गया था. सो ऑल वी कैन डू इज wait for the market to open. I mean like gap down होगा तो I'm pretty sure कि ये selling continued follow हो सकता है and there are very less chances कि ये फिर ऊपर को retest करे and breakout दे, लेकिन हो भी सकता है, can't say for sure. So अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप तीनों सिनेरियोज के लिए रेडी है कि गैप अप आए, गैप डाउन आए, कुछ भी आए, you are prepared. Now what I have done, let's come to that. I have 42,600 शॉर्ट्स, ठीक है. मैं इस जोन को बहुत काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस मानता हूँ एंड आई हार्डली बिलीव कि ये मार्केट 42,400 ब्रीच करेगा. 42,400 ब्रीच नहीं करना चाहिए. इफ इट ब्रीचेस देन आई एम गोना बुक माय लॉस एंड शिफ्ट माय पोजीशंस. मैं इसको स्ट्रैंगल बना दूंगा. I'll take a higher call and a very lower put like 41,500 something. But सेफ ट्रेड यहाँ पे यही रहेगा कि आप 43,300, 43,500, anything above 43,300 you can just close your eyes and sell all the calls. क्योंकि if market has to test these levels again, I mean this is how many points? This is a lot of points. Is close to 1400 points. So 1400 points का मूव आपको 700 पॉइंट ही मतलब if it breaches 42,600 or 42,800, you are surely knowing that
chances है, so you might get spooked, or you will be in some losses, but you'll still be OTM, and the days will go by as you get near the expiry. आप अगर आप weekly कर रहे हैं तो you can exit and then readjust your positions, but it will be very safe. 43,300 यहाँ पे अभी चल रहा है, 47 रुपीज। आप 4200 भी कर सकते हैं, बट नॉट 43, बिलो 43,000, ओके, because these are pretty obvious to go out of the money by the expiry as per my beliefs, okay. So बैंक निफ्टी का एनालिसिस आई थिंक लगभग आपको समझ में आ गया है। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी एज यू नो इस साल पे मतलब बहुत स्ट्रेंथ दिखा दिया compared to all the US markets and all. Like US markets are down from pretty much down from the highs. Like all time high से US market काफी down है. This is close to like 10%, 9%. Let's say 9%. So 9% down है अभी भी और हम लोग कुछ भी नहीं है. Like how much is Nifty? Nifty is barely, like this is the recent all-time high. Okay, like yeah. तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब लाइंस और भी अच्छे से खींचने पड़ेंगे, लेकिन यू कैन जस्ट एज्यूम। सो वी आर जस्ट डाउन 5.46% एंड वी आर इन अ क्रिटिकल लेवल, वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल। सो यू सी बैंक निफ्टी से शायद थोड़ा ज्यादा वीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस लोज को नहीं तोड़ा है। निफ्टी ऑलमोस्ट प्रीवियस लोज के काफी ज्यादा करीब है। लाइक प्रीवियस लो कितना था? प्रीवियस लो था 17,774। नाउ 17,774 तो नहीं आया था, वो 17,795 आने के बाद ही वो रिवर्स कर गया था, बट स्टिल वी कैन कंसिडर इट क्लोजर। सो हाई चांसेस दिस इज अ कंटिन्यूएशन, ओके। हम लोग डेली चार्ट एनालिसिस पहले करेंगे, मैं वीकली पे नहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वीकली पे ये स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस दिखा तो रहा है, लेकिन एकदम जोन्स पे खड़ा हुआ है, सो वी कांट रियली से। Now, Nasdaq, Dow Jones, all means shot up is last night on Friday night, because some US jobs data came, and it showed very positive news. Right now, the unemployment US data is around 3.5%. So close to, like they reported 350 lakh people got new jobs this year, this last quarter. So whatever, US has recovered that much, which is on the cards, right? Because उन्होंने US market ने at least डाउ को 22% करेक्ट किया है, उसके बाद they get to I mean ride this wave, okay? बट इंडियन मार्केट पे कोई करेक्शन आया नहीं है। आई मीन हांगसेंग, कॉस्पी सब कुछ डाउन थे, एंड स्टिल देयर इज नो करेक्शन, ओके। सो ऐसा मत सोचना कि मैं इंडियन मार्केट्स के अगेंस्ट हूँ। लाइक इट इज ऑलरेडी मींस यूएस इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी हिस्ट्री बना चुके हैं। लाइक वी आर द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द होल वर्ल्ड इन द ईयर 2022। अब 2023 में ऐसा होना, आई मीन लाइक हॉट एंड फैलेसी के हिसाब से कह नहीं सकते, हो भी सकता है, लेकिन मेरा बहुत अर्ली एनालिसिस था कि वी आर गेटिंग expanding channel, okay, this is a expanding channel. You see these lines, these two white lines, this is the expanding channel, okay, it just expands on both sides. So when we were about to test here, see, it breached and it came down, and it was going to test, but यहाँ पे some news आया, कुछ आया, I mean like some institutional buying, and we just went up. I mean my beliefs are that DIs are honestly destroying, means all the Indian people's money, retailers' money, because they are just buying anywhere. Like यहाँ पे इतना बड़ा buy नहीं आना चाहिए था। I'm sure on year end 26 दिसंबर से 31 दिसंबर FIs लोग छुट्टी पे थे, एल्गोस बिठा के। So basically आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो मैं 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन दिखाता हूँ आपको। There wasn't just from 26 December, after this candle
The price action didn't mean anything because there were lot of wicks and making no sense but going up and up and up. I mean, itna strong selling के बाद price action has no meaning. Expiries have been so hard, इतना strong selling, यहाँ पे gap up खोल दिया, उसके बाद ये इतना बड़ा मतलब रिकवरी कर दिया without any news, मतलब बिना डाकार मारे, बिना शोर शराबा किए, it's just going up. Now, obviously, markets are supreme. Please don't ever make the notion कि market supreme नहीं है and it should follow the strict price action. Price action is just a data and it can break that notion any day, any day. So just be prepared. The best strategies are to be risk averse and always be ready for any sudden happening. So stick with your stop losses or respect your levels, especially respect your levels. Like I am a believer in no SL strategies because in no SL strategies, if you are being a day trader and you are whole day you are sitting in front of the system, so you can do that. I means unless you really break your rules, that is your levels are getting broken and you're still not exiting. You just blindly exit. That's the main methods. So in 15 minutes time frame, this didn't last. This didn't last. This didn't last. And both waves were pretty strong. So in a single session for a 150 point straight fall in Nifty should be considerable. And I believe even though US markets have jumped, our market should be rational and the point where the whole Indian retail section were discussing that we have disconnected. Okay, we have disconnected from the US market as US market was falling and we were rising. Scenarios might change and right now US market should rise because they are in a very cheap stage in the terms of tech stocks as Google is also doing layoffs. 18,000 employees just got laid off yesterday and right now Wells Fargo also did it. Microsoft also did it. So in India still no layoffs but we have a COVID issue. So let's hope for the best, and I'm expecting the market should correct from here. So for next week, I know today a lot of extra knowledge. I mean, rather than other than analysis stuff, we talked about it a lot about the other stuff. So if you want me to have sessions with the other news, just put in the comments or next time I'm gonna just go with plain raw analysis, right? So for the final, if we get a flat opening, then we might hover around here and wait for either of the resistance or supports to get broken, and we'll follow the price action. And high chances are we get a gap down and we continue the trend क्योंकि ऊपर पे इतना बड़ा strong trend आ रहा है और इट्स लाइक मार्केट कभी स्ट्रेट वेव्स में फॉल नहीं करता और स्ट्रेट वी शेप पे रिकवर भी नहीं करता. सो यहाँ पे खुलेगा, अगर गैप डाउन आया तो इट विल टेस्ट और गैप फिल करेगा वो, उसके बाद वो डाउन ट्रेड कंटिन्यू करना चाहिए. नाउ कब तक कंटिन्यू करेगा वो आई मीन क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस 7724 7700 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ sorry, now if we do गैप अप पे तो देखना पड़ेगा क्योंकि गैप अप पे चांसेस विल बी वेरी लेस बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टर्स लोगों ने पोजीशंस बना के रखे हैं, तो
they will book pretty heavy losses. So market will get another boost. Now in second half, will it might come to fill the gap, and then it might continue the upper stream, क्योंकि मार्केट ऐसे ही आता है, मीन्स ऐसे वी शेप पे तो नहीं आता है वो, ऐसे डाउन साइड आता है और ऊपर भी जाएगा तो एकदम ऐसे ही जाएगा, लोअर लोअर लोस लोअर हाइज, सॉरी, लो यहाँ पे एक लो बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा प्रीवियस लो से, हायर लो, तो हायर लो बनाएगा, हायर हाई बनेगा, ऐसे करके करते जाते हैं. सो will continue upwards if there is a gap up. फ्लैट और गैप अप सिनेरियो में बेसिकली यही मतलब है कि फ्लैट और गैप अप सिनेरियो में मार्केट माइट कंटिन्यू टू अपवर्ड्स जर्नी. नाउ 18,000 is still a crucial level. If it breaches 18,000 then एक पॉजिटिव सेंटीमेंट फिर से बन जाएगा. ये वाला जो पूरा सपोर्ट जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिव जोन बन के रहेगा और 80,000 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 18,200 क्रॉस कर जाएगा, लाइक कल का तो एक ही दिन है, विल सी इन द फ्यूचर डेज. सो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय एनालिसिस. थैंक यू.